कुछ दिन पहले 26 सितंबर को जब मार्केट्स करेक्ट हो रहे थे तो वी वांटेड टू टेक एडवांटेज इन फ्यू ऑफ आवर क्लाइंट्स पोर्टफोलियोज बाय बाइंग एट अ चीपर रेट. सो वी डिडंट वांट टू इंडिविजुअली पिक स्टॉक्स, वी वांटेड टू बाय अ पोर्टफोलियो ऑफ इट. तो जनरली you end up doing it through a mutual fund because वो well managed portfolios होते हैं. But we realized that in mutual funds you're at the mercy of end of the day NAV. और बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट्स फॉल हो रही हो, ड्यूरिंग द डे रिकवर हो जाती है, right? So that's where we came across one interesting concept which allows you to take advantage and do basket picking or basket buying without depending on the end of the day close, end of the day NAV, right? I'm going to talk about exchange traded funds or ETFs. Hi, this is Krishna Makharia, CFA, Executive Director and Head of Research with iVentures Capital, an award-winning wealth management boutique. So did you ever find yourself in this situation where you want to buy into a correcting market but don't know what to buy? Or you want to buy a portfolio but don't want to be dependent on or don't want to be at the mercy of what the closing market is going to be, right? We all have caught ourselves in a situation like this, right? So I'm going to talk to you about exchange traded funds. So this is one of the interesting instruments which combines the benefit of stocks as well as mutual funds. So ETFs, as the name suggests, are funds. तो जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है तो म्यूचुअल फंड इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स और कमोडिटीज, उसी तरह ETFs पैसा पूल करती है और बहुत सारे स्टॉक्स में बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर और बेस्ड ऑन सर्टेन कन्विक्शन ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कृष्णा, म्यूचुअल फंड और ETFs में फर्क क्या है, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, जब आपको परचेज करना होता है तो यू आर बाइंग यूनिट्स फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. बट इन ETFs व्हाट हैपेंस इज ये यूनिट्स क्रिएट होकर एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं. तो यू आर नॉट बाइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी बट यू आर बाइंग इट फ्रॉम समवन हु सेलिंग इट. जिस तरीके से आप अपने स्टॉक्स खरीदते हो, जैसे कंपनी अपने स्टॉक्स बनाती है और प्राइमरी इश्यू में उसे सेल कर देती है, एंड सेकेंडरी मार्केट में जब आपको खरीदना होता है तो यू आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम द कंपनी, यू आर बाइंग इट फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टर हु वांट्स टू सेल इट, राइट? तो इसमें आपको एक एडवांटेज ये होता है कि व्हेन द मार्केट्स आर मूविंग, राइट, डिमांड एंड सप्लाई ये ETF के प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, एंड चलती हुई मार्केट में जब आपको बाय करना होता है, इफ द मार्केट इज डाउन and you want to buy it, you are able to buy it and lock in your price then and there and not dependent on the end of the day NAV. So where can ETFs invest? So ETFs are a very flexible instrument which can invest into multiple asset class. So if you look at my screen, so ETFs can invest into equities, fixed income, alternatives, cash and alternatives, and commodities. So when you look at and when you Google search, you will find ETFs which are investing into precious metals like gold, silver as well. You will find a lot of ETFs which are investing into government bonds or PSU bonds as well, and you will also find ETFs which are investing into markets on different levels, be it global markets or domestic markets. So few renowned ETFs that you must have come across are Nifty B's, Nifty 50 ETF, Nifty Next 50 ETF, etc. and etc. If you look at the market size of the ETFs, there has been a lot of charm that has been growing because across the world ETFs are already a renowned concept, because when you look at the data globally, there are hardly few fund managers that are able to beat the benchmark, and that's where passive investing is picking up, and ETFs are playing a very important role because large part of the ETFs are managed based on indices where there is no active management involved. तो अगर इंडिया में भी अगर हम स्टोरी देखते हैं तो 2015 में 12,000 करोड़ या 13,000 करोड़ का मार्केट था ETF का इंडिया में, एंड टुडे व्हेन यू लुक एट द मार्केट इन जस्ट 7 years, द मार्केट हैज ग्रोन टू अबाउट 4,30,000 crores
in India, right? So that's a rapid growth wherein, industry has grown by more than 55%, in the last 5 years, right? This is leading to a lot of participation, who want to maintain increase their holdings into equities, still not get into the nitty-gritties of selecting or hand-picking stocks. So ETFs are playing a very important role there, right? India के बारे में अगर हम बात करें, and when you look at the large cap universe, so this is I'm showing you the results of SPIVA scorecard, right? So SPIVA S&P का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर वो across the world अलग अलग मार्केट्स में, be it large cap, mid cap और small cap in the specific market, इवेल्युएट करते हैं कि कितने एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को या इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर हम एक सेक्शन ऑफ द डेटा लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ स्पीवा दिसंबर 2021 का। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कितने परसेंट फंड मैनेजर्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। सो व्हेन यू लुक एट द स्क्रीन, यू विल बी एबल टू सी दैट on a 3-year basis, 70% of the fund managers are unable to beat the benchmark. वही अगर 5 साल की टाइम होराइजन पे देखते हैं हम, तो 82% of the fund managers are unable to beat the benchmark. And when you talk about 10-year horizon, 68% or 70% of the fund managers are unable to beat the benchmark, which is a very shocking news. राइट आप अगर 10 साल 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो और उस दौरान भी अगर आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर लूजिंग बिग टाइम, राइट? सो व्हेन वी कवर द एडवांटेजेस ऑफ ETFs, the biggest advantage of ETF is diversification, right? So it helps you do basket picking rather than getting into the nitty-gritties of selecting individual stocks. Second, it is a low cost of getting your funds managed. Today, when you look at most mutual funds on the equity side have an expense of somewhere between 1% to all the way to 2.5%, right? But when you look at ETFs, since they are passively managed and work on replicating a specific index, so there is no additional value or conviction driven thoughts that the fund manager needs to add. तो यहाँ पर क्या होता है कि फंड मैनेजर को और उसकी टीम को सिर्फ इंडेक्स को देखना है और इंडेक्स के बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और जब भी इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होती है या कोई स्टॉक प्लस और माइनस होता है तो अपने पोर्टफोलियो में भी उसको चेंज करना है, राइट? तीसरी चीज है कि ETFs में जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स देयर आर नो वन कैन इन्वेस्ट विद अ वेरी स्मॉलर अमाउंट एज वेल, एंड थर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर इज द पैसिव मैनेजमेंट, राइट? जैसे फंड मैनेजर्स एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर एंड द टीम हैज देयर ओन डिस्क्रिशन टू टेक एक्शन वेयर दिस आइडिया कुड बी where the action taken could be right or wrong, which the time only says. In a passive fund or an index fund or an ETF that we're talking about, here automatically the changes in the portfolio happens based on certain parameters, right? Like if a company becomes big, automatically that gets included into the index, and so it will be included into the ETF in your portfolio. And fifth, the biggest advantage is trading flexibility, which we already spoke about, जहाँ पर आप ETFs को during the market hours कभी भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो, and you can also trade and invest based on that. Hope you find this video interesting. We'll be making more such videos on the subject of ETFs and Smart Beta ETFs, where we'll be comparing ETFs versus index funds, and also we'll be talking about top 3 ETFs that you should have in your portfolio, right? Subscribe to the channel to stay updated about the videos, hit the like button and share it with your friends to spread the knowledge. Thank you.